In 2022, NASA did the impossible. They made a black hole sing. Using data from the Perseus Galaxy Cluster, scientists converted pressure waves into sound, revealing an eerie, deep hum. It's the sound of billions of stars swirling in chaos. Space is silent, but black holes, it turns out, have a voice, and it's one you won't forget. In 2022, ये है ब्लैक होल की असली इमेज जिसका नाम है M87 और ये है इंटरस्टेलर मूवी वाला ब्लैक होल जिसका नाम है गारगेंचुआ। कहते हैं कि ये ब्लैक होल सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन ये तो दूर दूर तक मैच नहीं करता ब्लैक होल की असली फोटो से। तो बात ये है ना इस चीज की, जो इंटरस्टेलर वाला ब्लैक होल है इसको हम जिस तरफ से देख रहे हैं वो साइड वाला प्लेन है। अगर हम इसको ऊपर वाले एंगल से देखें तो ये ब्लैक होल कुछ ऐसा दिखेगा, और अगर मैं इस फोटो को ब्लर कर दूं क्योंकि ओरिजिनल इमेज भी ब्लर्ड ही आई है बहुत दूर होने की वजह से, तो हम देख सकते हैं कि ये इमेज ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। ये है ब्लैक। What if I told you that black holes can sing and NASA captured the sound? See, over 250 million light years away lies a supermassive black hole and it's humming. NASA captured the noise by converting pressure waves rippling through cosmic gas created by the black hole into a sound that humans can hear. And this was necessary because the black hole's pitch is so low it's a whopping 57 octaves below middle C. Or in other words, it's a sound so deep it's far beyond what the human ear could ever naturally detect. I wish I could sing too, but I digress. After some fancy audio enhancements, this is sort of what a black hole sounds like.